I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is app development. Learning aims. After studying this chapter, you will be able to know about the app, know about the categories of app, understand about Android and iOS, download and install an app, know about the types of app and develop an app. So technology is advancing at an unprecedented rate and smartphones have become an integral part of our daily lives. While their primary function remains telecommunication, the advent of apps has significantly expanded their capabilities. Today, smartphones allow us to perform a variety of tasks that were previously unimaginable, such as online bill payments, online shopping, video calling, messaging and gaming. तो बहुत unprecedented पेस पे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है. जो चीज़ें हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वो आप एक जगह बैठे बैठे कर सकते हो. ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, बैंक का सारा काम जिसके लिए बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था वो एक ही क्लिक पे अब आपके फोन पे ही हो जाता है. ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. Now, what is an app? An app, short for application, is a software program designed primarily for handheld smart devices like mobiles and tablets. Apps enable users to perform personal and professional tasks more efficiently. Today, there are thousands of apps available for smart devices. Most can be freely downloaded from app stores while some require purchase. So, app is a short form for applications, a kind of software program which is designed to do specific functions. अब कुछ apps free of cost होते हैं और कुछ को use करने के लिए आपको bare minimum price देना पड़ता है. Look at the three most popular app stores given below. Google Play Store for Android, Apple Play Store for iPhones, and then Microsoft Play Store for Microsoft phones. Tech Nuggets, the Windows Store is not in use for mobile devices, but we can download the apps for our computer from the Windows Store. Now, there are mainly three types of applications. Number one is desktop applications. A desktop application is a software developed primarily for use on computers or laptops. These applications are dependent on the hardware and operating system they run on and are typically designed for a specific operating system. Examples of desktop applications include Paint, Notepad and Microsoft वर्ड. अब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये आपके डेस्कटॉप पे ही फंक्शन करते हैं. देन यू हैव मोबाइल एप्लीकेशंस. अ मोबाइल एप्लीकेशन or mobile app is a software program developed for handheld devices such as smartphones and tablets. These apps are installed directly on the device and run locally. Examples of mobile applications include WhatsApp, Facebook and Messenger. Mobile applications जो होते हैं ये आपके handheld devices, your mobile phones, your tablets, उनके लिए ये बनाए जाते हैं. For example, WhatsApp, Facebook and Messenger. Then you have web applications. A web application is a software program stored on a remote server and accessed via the internet through a web browser interface. Web apps require internet connection to function. फिर आपके web applications होते हैं ये आपके software program होते हैं जो आपके remote server पे होते हैं, and in order for you to access them you have to open the web browser using the internet and then only you will be able to use these web applications. Now we have Android and iOS. Nowadays most of the mobile devices run on either Android and iOS. Let us know about them below. Android is a mobile operating system developed by Google. It is the most widely used operating system for mobile devices. Google and several other mobile manufacturers use Android as the operating system for their devices. Android offers a user-friendly environment for its users. तो Android आपका operating system होता है which is designed by Google. ये आपके normal Android mobile devices में रहता है, and because of that only you are able to use all different kinds of applications that are run on your mobile phones. Then you have iOS. iOS, formerly iPhone OS, is also a popular operating system developed by Apple inclusive for its handheld devices such as iPhone and iPad. अब iOS formerly iPhone OS के नाम से जाना जाता था, which is iPhone operating system. ये आपके iPhones और iPads में installed रहता है to run different programs on these devices. Now you have certain types of mobile apps. Apps provide specific functionality in a more simpler and user-friendly manner. We use so many apps on our mobile device to perform different types of tasks. Generally, these apps can be divided into three types. Let us learn about these types in detail. Number one is native apps. Native apps are platform dependent, meaning they are specifically developed for a particular platform. An app created for iOS will not run on other platforms like Android, Windows or BlackBerry.
In other words, an app developed for Android cannot be installed on an iOS device. Most of the apps on our mobile devices are native apps, and these apps are readily accessible from app stores and provide the fastest, most reliable and most responsive user experience. Examples of native apps include camera, microphone and gallery. अब native apps होते हैं जो आपके एंड्रॉइड में बनाया होगा तो सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स में चलेंगे, iOS ने बनाया होगा तो सिर्फ iOS में ही चलेंगे और दूसरे में ये नहीं रन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैमरा, माइक्रोफोन एंड गैलरी. देन वी हैव द वेब एप्स. Web apps are essential web applications that provide a user experience similar to native apps. These apps are not available on app stores, therefore a browser is required to access them on a mobile device. Additionally, an internet connection is necessary to use the web apps. Web apps are different from websites. The major difference is that a web app can be a small part of a website which provides a particular functionality. Some of the examples of the web apps are Pinterest, Myntra and Google Docs. आपके web apps होते हैं, ये बनाए जाते हैं to somehow match the functionality of the native apps, but you need a browser and you need internet connection to use them. For example, Pinterest, Myntra and Google Docs. And then we have the hybrid apps. An app that combines the features of both native apps and web apps is called a hybrid app. Like native apps, hybrid apps are developed for a specific platform and are available on the app stores. These apps must be installed on your mobile device before use. Examples of hybrid apps include Instagram and Gmail. अब hybrid होते हैं आपके native और वेब एप्स के कॉम्बिनेशन में. इनको यूज करने से पहले आपको इनको ऐप स्टोर से अपने अपने मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल करना होता है एंड देन यू यूज देम. फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, यू नीड टू इंस्टॉल द इंस्टाग्राम ऐप एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज इट. Tech nuggets: web apps and hybrid apps can utilize various hardware features of a device such as the camera and are developed using HTML and CSS. Today, developers use tools to package the code of hybrid apps with a browser, making them function like native apps, and this approach allows hybrid apps to be cross-platform, meaning the same code can run on the multiple platforms, and this technique saves both development time and cost. तो बहुत सारे web developers HTML और CSS का use करते हैं to develop these kinds of apps, which also saves their time by using different kinds of technique and multiple platforms. Now we have different categories of apps. Nowadays, people use smartphones for a variety of purposes, including communication, learning, teaching and playing games. The rise in mobile usage and advancement in mobile technology have led to significant growth in mobile app development. Popular app stores like Apple's App Store and Google's Play Store offer a wide range of apps categorized into various sections for easy navigation. अब आपके कुछ ऐसे ऐप्स की कैटेगरीज होती है जो आपके स्पेशल पर्पसेस के लिए आपके फोन्स में इंस्टॉल करी जाती है या फिर आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, popular app stores like Apple's App Store, Google's Play Store, they offer a wide variety of apps. इनके थ्रू आप और apps को इंस्टॉल कर सकते हैं. Then we have the productivity apps. Productivity apps, also known as business apps, used by businessmen to perform tasks. These apps allow businessmen to do their work more effectively. These apps are capable of performing many complex tasks on the go. Productivity apps are developed to help us to be more productive. The most common used productive apps are Google Calendar, Evernote, Dropbox, CamScanner and Google Translate. अब कुछ productivity apps होते हैं जो specific functions के लिए आपके बनाए जाते हैं. इनकी वजह से businessmen जो होते हैं वो अपना काम मोबाइल फोन्स में या कंप्यूटर से लैपटॉप्स में कर पाते हैं. They help us and different people to improve their productivity. For example, Google Calendar, Evernote, Dropbox and CamScanner, etc. Then we have travel apps. Travel apps makes our journeys easier, more comfortable, enjoyable and memorable. They handle daily tasks such as booking a cab, train tickets and even appointments with doctors. With travel apps, we can book flights, hotels, trains, taxis and virtually any mode of transport. These apps also assist us in exploring unfamiliar locations. The most commonly used travel apps include Ola, Uber, Airbnb, Make My Trip, Google Maps, GoIbibo, TripAdvisor and Google Earth. अब कुछ ट्रैवल एप्स होते हैं टू मेक आवर जर्नीज मोर ईजियर, मोर कंफर्टेबल एंड मोर एंजॉयबल. यहाँ बैठे बैठे आप हर फ्लाइट, ट्रेन, बसेस, कैब्स कुछ भी बुक कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग. कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है टिकट बुकिंग्स के लिए. अराइवल डिपार्चर का टाइम देखिए, लेट होता है, डिले होता है, वो भी आपको पता चल जाता है फोन पे अपडेट करने से. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स, GoIbibo, दे हेल्प यू इन मेकिंग योर ट्रैवल ईजियर.
Then we have utility apps. Utility apps is used by everyone of us on a daily basis. These contain handy tools and help us perform simple tasks. The most commonly used utility apps are Flashlight, ShareIt, कैलकुलेटर, इंटरनेट स्पीड एंड QR और बारकोड रीडर. अब यूटिलिटी एप्स ये हम सब डेली बेसिस पे यूज करते हैं टू डू सिंपलर टास्क. जैसे फ्लैश लाइट हो गया, शेयरिट से आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो, कैलकुलेटर हो गया, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी एप्स में आती हैं जो हम डेली बेसिस पे अपने फीजिबिलिटी के हिसाब से यूज करते रहते हैं. Then comes the educational apps. So e-learning is gradually replacing traditional learning methods, and the pandemic has significantly accelerated the shift to online education. Educational apps offer a platform for children to learn anytime and anywhere. These platforms integrate learning management systems and technologies to provide a customized, comprehensive learning solution. They facilitate and promote virtual teaching with a strong emphasis on self-learning. Some of the most commonly used educational apps include Duolingo, Khan Academy, Udacity, Lynda, Vedantu and Byju's. अब ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस कर रहे हैं ई लर्निंग एप्लीकेशंस, जहाँ पे आप बैठे हुए हो, बेयर मिनिमम आप फीस देते हो, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए आपके डिवाइसेस पे, आप लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट्स आप दे सकते हो अपने जगह पर बैठे हुए. जैसे खान अकेडमी, लिंडा, वेदांतु एंड बायजूस आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर ई लर्निंग एप्लीकेशंस. Then you have social networking apps. Social networking apps follow us to connect with friends and family members. By using social networking apps, we can share our personal and professional views, photos and videos. Some people also use these apps to expand the business all over the world. Facebook, Snapchat, WhatsApp, Hangouts, Instagram, Telegram and LinkedIn are the most commonly used social networking apps. अब आपके सोशल नेटवर्किंग एप्स आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप. इनको आप नॉर्मल एंटरटेनिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, प्लस सम पीपल यूज देम टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड एंड दे आर बीइंग वेरी सक्सेसफुल एट इट. Then we have the e-commerce apps. E-commerce means to buy or sell products on an online service over the internet. It is a large ecosystem that involves customers, vendors, marketing activities and technologies. E-commerce apps allows us to buy or sell products while sitting at home or any other place. Amazon is the leading online marketplace which provides the excellent shopping experience to their users. Flipkart, Myntra, PhonePe and Paytm are some of the other examples. अब कहीं भी आप बैठे हो, एप्लीकेशन आपके फोन में है, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा, आपको जो खरीदना है बैठे बैठे खरीद सकते हो. दिस इज ई कॉमर्स. अब बिजनेस हो रहा है ऑनलाइन बाय यूजिंग द इंटरनेट. खरीद सकते हो, बेच सकते हो, पेटीएम से, फोन पे से, अलग अलग ऑप्शंस आपके पास आते हैं बाय यूजिंग दीज एप्लीकेशंस. बाय जस्ट बेयर मिनिमम subscription amounts, internet connection, you can buy and sell goods online also. Then we have the gaming apps. Today's most popular category of mobile apps is gaming apps, which shared more than 24% area of the App Store. Gaming apps allow us to improve our cognitive skills such as attention and focus. Some of the gaming apps allows children to learn while playing. These apps also allow to play games with other friends and share score on social media such as PUBG, Candy Crush Saga, Temple Run, Solitaire and Angry Bird. अब गेमिंग ऐप जो ऐप शो का 24% एरिया कवर भी करते हैं, बच्चों की कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पहले तो हमें बोर्ड गेम्स लाने पड़ते थे, उनके भी अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं, बट अब ऑनलाइन भी आप उन गेम्स को बच्चों को खिला सकते हो. गेम भी हो जाता है, कॉग्निटिव लर्निंग भी एनहांस हो जाती है. Then we have the entertainment apps. Entertainment apps are developed to entertain the people. These apps follow users to watch videos, search upcoming events, etc. The main purpose of the entertainment app is to keep the users engaged. Gaming apps also entertain users, but they are different from entertainment apps. The most commonly used entertainment apps are Hotstar, Voot, Netflix, YouTube and Amazon Prime Video. And entertainment apps आते हैं, for example Netflix हो गया, Amazon Prime हो गया, Voot हो गया. इसमें आप movies, series, serials, मैचेस, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें देख सकते हैं. Now downloading and installing the app. An app is a software program. Hence, to use any app, we need to first install it on your mobile phones. As we have already learned, Google's Play Store and Apple's App Store are the most commonly used app stores. Among these two, Google's Play Store is more popular due to the huge market of Android devices. So we are taking an example of an Android device to install an app from the Google's Play Store. तो आपका Google Play Store होता है जो Android में होता है, and because most of the population is using the Android mobiles, तो हम यहाँ पे example भी Android phone का ही लेंगे जहाँ पे Google Play Store को यूज करते हुए ऐप को इंस्टॉल किया जा सकता है. So to download and install an app on an Android device, perform the following steps. Tap on the Play Store icon of an Android mobile. The screen of the Google's Play Store appears. Type the name of the app or related keyword in the search for apps and games box at the top.
In this example, we have typed the productivity app keyword, a list of related apps appears. Tap on the desired app to install. In this example, we have tapped the Cam Scanner app. The app info screen appears. Tap on the install button. The downloading of the app will start. When the downloading is completed, the installation process will start automatically. Within few seconds, the app will be installed on your mobile and the uninstall and open buttons will appear on the Google Play Store's home screen. Tap on the open button to use the app. अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर आइकन पे क्लिक करना है एंड्रॉइड मोबाइल के, जो आपका स्क्रीन ऑफ द गूगल प्ले स्टोर है वो अपीयर हो जाएगा. जो भी आपका ऐप का नाम है, ये रिलेटेड कीवर्ड्स है, उसको आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है. इस एग्जाम्पल में हमने टाइप किया है प्रोडक्टिविटी, रिलेटेड सर्चेज आ जाएंगे. जो भी डिजायर्ड ऐप है उसको आपको क्लिक करना है, उस पर आपको इंस्टॉल क्लिक करना है. इस एग्जाम्पल में हमने टैप करा है कैम स्कैनर ऐप पे. द ऐप इन्फो स्क्रीन अपीयर्स. इसके बाद आपको टैप करना है इंस्टॉल बटन पे. डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी. जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, द इंस्टॉलेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. कुछ सेकेंड्स में ही द ऐप विल बी इंस्टॉल्ड इन आवर मोबाइल फोन्स एंड अनइंस्टॉल और ओपन के बटन आपके पास गूगल प्ले स्टोर के स्क्रीन पे आ जाएंगे. टैप ऑन द ओपन बटन टू यूज द ऐप. Then you have a quiz whiz and these questions you have to answer them on your own. Now, developing an app. All apps are developed by using an app development tool. App development tool can best and alone software or a web app. There are different types of free or paid app development tools available in the market. One of the free and most popular app development tool is AppyPie. Some other popular app development tools are MIT App Inventor, Mobile Rodi, Appery and App Machine. तो आपका apps या मोबाइल ऐप्स या गेम्स आपके जो डेवलप होते हैं, ये ऐप डेवलप होते हैं, ये आपके डेवलपिंग टूल से होते हैं. कुछ आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं मार्केट में अवेलेबल, फॉर एग्जांपल एपीफ्राई, एंड देन फॉर सम यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट. एपीपाई is a cloud-based app development tool. It enables users to create apps without having programming skills. AppyPie provides a platform where we can create apps by dragging and dropping screens and other elements. Follow the steps to develop an app on AppyPie. Open the web browser on the computer and type https://www.appypie.com/appbuilder/appmaker, the URL in the address bar, and then press the enter key. Click on the create your app button. The page app appears asking name for the app. Enter the desired name and click on the next button. Next page appears asking for category in which that app best fits. Select the desired category. In this example, we have selected the education category. Next page app asking for color scheme for the app. Select the desired color scheme. Let us select Deep Ocean. Next page appears asking for device for which we can create the app. Here we have selected the Android device. Next page appears, click on the save and continue button. The sign up page appears, enter valid email address and password. We can also sign in using other accounts by clicking on icons available. After filling the email address and the password, click on the sign up button. AppyPie sends a verification code on the entered email address. On the next page, we need to enter the verification code and click on the confirm button. The page with the final view or customization appears. To make the final changes if required, click on save to continue button to save the changes if made. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेब ब्राउजर ओपन करना है. ये जो URL गिवन है उस पे जाना है, एंटर की प्रेस करनी है, क्रिएट योर ऐप बटन पे क्लिक करना है. द पेज ऐप विल आस्क द नेम फॉर द ऐप. अपना डिजायर्ड नेम आपको डाल देना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. नेक्स्ट पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा आस्किंग फॉर द कैटेगरी जिसमें आपका ऐप बेस्ट फिट करता है. सिलेक्ट द डिजायर्ड कैटेगरी. इस एग्जाम्पल में हमने एजुकेशन कैटेगरी को सिलेक्ट किया है. फिर नेक्स्ट पेज ऐप आस्किंग फॉर कलर स्कीम फॉर द ऐप. अपने हिसाब से डिजायर्ड कलर को सिलेक्ट कर लीजिए. लेट अस select Deep Ocean. Next page appear होगा asking for the device for which we want to create the app. यहाँ पर हमने Android device को select किया है. Next page आ जाएगा, Save and Continue बटन पे क्लिक करेंगे, Sign up पेज सामने अपीयर हो जाएगा. एक valid email address और पासवर्ड को डालिए. We can also use the sign in using other accounts by clicking on icons below. जैसे email address और पासवर्ड डाल दोगे आपको sign up बटन पे क्लिक करना है. AppyPie आपके ईमेल अकाउंट पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा. अपना जो भी आपका कोड है वो आप ईमेल एड्रेस के साथ एंटर कर देंगे. फिर नेक्स्ट पेज आएगा जहां पे आपको वेरिफिकेशन कोड को एंटर करना है एंड देन आपको कंफर्मेशन बटन पे क्लिक करना है. द पेज विथ फाइनल व्यू और कस्टमाइजेशन अपीयर्स. टू मेक द फाइनल चेंजेस इफ रिक्वायर्ड. सब फाइनल हो जाएगा. क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन टू सेव द चेंजेस इफ मेड. नाउ टेस्ट योर ऐप पेज अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ QR कोड.
when we can scan the QR code by using scanner app of our mobile, we will get a link of our app on the mobile. This link provides us the download link and the steps to install the app on our mobile. Before installing the app, we need to enable the settings of our mobile to install the apps from the unknown source. अब जाइए अपने QR कोड से देखिए कि आपका ऐप रन कर रहा है या नहीं. उससे पहले सेटिंग्स में जाके आपको अननोन सोर्सेज का जो आपका सेटिंग है वो हटाना पड़ेगा ताकि आप इस ऐप को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर पाएं. Now let's sum up. The three most popular app stores are Google's Play Store, Apple's App Store and Microsoft's Windows Store. There are mainly three types of applications: desktop, mobile and web. Nowadays, most of the mobile devices run on Android and iOS. Android is an operating system for mobile devices developed by Google, whereas iOS developed by the Apple inclusive. And there are three types of mobile apps: native, web and hybrid. So basically इस चैप्टर में आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें आपका नेटिव, वेब और हाइब्रिड आता है, और एंड्रॉइड, iOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Now explore yourself. Multiple choice questions. Which of the following is not a type of application? So which is not a type of application? The hardware application is not a type of application. Fill in the blanks. Dash is a software program designed for handheld smart devices like mobiles and tablets, and these are your mobile phone applications. Write T for true and F for false for each statement. Web apps can be accessed offline once downloaded. No, absolutely incorrect. Critical thinking. Ask your parents how they have studied at their school times. Make a note in the notebook. Also note down the points of difference in the education system today and as compared to in the past. अपने पेरेंट्स से पूछिए वो कैसे पढ़ाई किया करते थे, आप अब कैसे करते हो, किस तरीके के चेंजेस आए हैं. Compare and contrast between the two. Answer the following questions. What is the primary difference between the native and web apps? Native apps आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल्ड होते हैं. वेब एप्स के लिए आपको वेब ब्राउजर्स पे जाना पड़ता है. Now we have Tech Fun. In the Google Apple App Store, search the following educational apps. Before we may download, always look at the ratings and comments left by the other people. It gives us a good indication of whether the app suits our needs or not. 3 से 4 आपकी applications हैं. Depending upon your operating system, जाइए अपने Google Store पे या App Store पे और वहाँ पे से इन सारे applications को इंस्टॉल करिए, रेटिंग्स वगैरह चेक करिए और देखिए कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये सूट कर रहे हैं या फिर नहीं. So students, with this we are done with this chapter. Go through this chapter thoroughly, revise it properly, and rest of the exercise questions, please do it yourselves.